Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for CLAT. So today we are going to discuss our constitutional premises and then we will be discussing very important part, that is the fundamental rights. So what is the fundamental rights? The basic philosophy of fundamental right is this, that there are various type of rights, the human rights, the natural rights, and then we come across the part 3 fundamental rights. So किसी भी सरकार के लिए सभी लोगों के सभी राइट्स सुरक्षित कर देना ये तो नियर इम्पॉसिबल काम है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा, सोचा और प्रोवाइड किया कि जो राइट्स लोगों के इंडिविजुअल की फुलेस्ट ग्रोथ के लिए, वो फुलेस्ट ग्रोथ फिजिकल, स्पिरिचुअल, टेम्पोरल हो सकती है, उसके लिए जो बहुत जरूरी राइट्स हैं, दैट विल बी इंश्योर्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। और सरकार भी चाहे तो इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। नाउ मैंने कहा कि वायलेट नहीं कर सकती है, लेकिन क्या रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है? सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर सरकार या पार्लियामेंट लॉ बना के, रेगुलेशन बना के फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट कर सकती है। देन the objective of fundamental right is to establish political democracy, because the fundamental rights, more often numbers, they are related to political rights. Socio-economic rights are provided under directive principle of state policy. Then the concept, as we discussed yesterday, is taken from the Bill of Rights from US Constitution. Then we also understand the basic principles behind the philosophy of fundamental rights, that these are negative in nature. These are restriction on the power of state. Fundamental rights में state को कोई power नहीं दी जा रही कि आपको ये चीजें करनी हैं, बल्कि state के ऊपर restriction है that you debar to do certain things. जैसे इक्वेलिटी, तो स्टेट को ये नहीं कह रहे हैं कि इक्वेलिटी प्रोवाइड करनी है, स्टेट को कहा जा रहा है कि आप इक्वेलिटी वायलेट नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कॉज नहीं करेंगे. सो फंडामेंटल राइट्स एसेंशियली इज अ फेटर, इज अ चेक ऑन द पावर ऑफ स्टेट. देन we discussed that three things. We must remember that fundamental rights are only those rights which are enumerated in the part 3. And if there is any right provided elsewhere in the constitution, that would be called the constitutional right. Like Article 300A, right to property is not a fundamental right. That is not enumerated in part 3. So Article 300A provides property right as a constitutional right. Then comes the statutory right. All those rights which are provided to us by some parliamentary or state legislative law, by some statute. Now what is a statute? That means act. That means law. So if any right which is being provided through enactment of the legislature, that will be called statutory right, क्योंकि वो हमें किसी statute से मिल रहा है. Now we come to this some important information जो कई बार पैराग्राफ्स के अंदर हमें एनकाउंटर करनी पड़ सकती हैं. वैसे तो फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों को अवेलेबल हैं, मतलब चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, बट these 5 fundamental rights are specifically available to citizen only. फॉरेनर्स को एज फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है. दैट गोज विद आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30. सो इसके अंदर क्या है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, एक तो फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट कर सकती है स्टेट, तो क्या किसी सूरत में सस्पेंड भी हो सकते हैं अंडर नेशनल इमरजेंसी. सो अंडर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 would be automatically suspended if national emergency is declared on the ground of war or external aggression. But Article 359 says that if national emergency is declared on any ground, then President of India is having the power to suspend any or all fundamental rights, but by separate proclamation, separate order, except. But कौन से फंडामेंटल राइट वो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? आर्टिकल 20 एंड 21. सो प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन अंडर आर्टिकल 20 and right to life and personal liberty under Article 21 will never be subjected to suspended even under national emergency. Let's go further. That what are the types of fundamental rights? So right now we enjoy 6 types of fundamental rights. That is right to equality, freedom,
then right against exploitation, then religious rights, then comes the cultural and educational rights, and finally right to constitutional remedy, that writ jurisdiction of the Supreme Court. In the original constitution there were 7 type of rights. So which is the 7th right which is being abrogated now? That was right to property. जैसे मैंने अभी कहा 300A में है, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट वाज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31. सो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, दैट पर्टिकुलर right to property as a fundamental right was abrogated, and now it is provided under article 300A as a constitutional right to us. So objectivity must be clear that right now we enjoy 6 types of rights, 6 types of fundamental rights, and the 7th type का जो initially था वो अभी हटा दिया गया है, वो constitutional right है. Now we come closer. What are in the articles? So we must understand the definition of state. So this particular word state, ये बहुत सारे context में अलग अलग मतलब रखता है. कभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए भी state यूज किया जाएगा, और international law में country के लिए भी state यूज किया जाता है. तो कहीं गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए स्टेट यूज किया जाएगा. सो व्हाट इज द रेफरेंस वी हैव टू इन्फर जब स्टेट फंडामेंटल राइट के रिलेशन में यूज किया जाएगा? सो आर्टिकल 12 डिफाइंस दैट all the government apparatus, so the parliament, the government of India, the legislature of the state and government of state, then comes the 3rd tier of the government, that is the panchayati raj and the municipality. All 3 tier of the government will come under the definition of state. And then it comes other authorities under the control of the government. So जितने भी government authorities हैं वो सब fundamental right के लिए state का काम करेंगे. That means a traffic constable at duty at any chowk, that particular authority is state in respect to the fundamental rights. So a government doctor, a engineer, a food inspector अपनी official capacity में स्टेट के रोल के अंदर होते हैं जब भी फंडामेंटल राइट की बात हो रही होती है. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें कुछ लीगल प्रिंसिपल्स भी यहां से सीखने होंगे. आर्टिकल 13, one of the most powerful article of Indian Constitution, and Article 13 manifestly declares that any law which takes away or abridges the fundamental rights shall be declared unconstitutional and void. That means precisely no law can be implemented in this land which violates the fundamental rights. But how come? One legal principle, here comes the doctrine of eclipse. Now what is doctrine of eclipse? I believe you know the eclipse system, that one planet is covered by another planet and shadows part is non-visible, the non-shadow part is the visible. So that eclipse phenomena in the geography, that has been taken into legal principle. Now I want to say that any law which violates the fundamental rights shall be declared unconstitutional and void up to the repugnancy. उस particular law का जितना portion, जितने section fundamental right को violate करते हैं, सिर्फ उतना portion unconstitutional and void करार दिया जाएगा. Rest of the law, rest of the piece of the law which doesn't violate the fundamental rights may be a good law, and that will be implemented. So law, if any law violates the fundamental right in some portion, will not be declared unconstitutional and void in its entirety. Only that particular portion which violates the fundamental right will be declared unconstitutional and void. Surgical strike जैसा कुछ आप imagine कर सकते हैं. Then you know this thing, that what is the law in respect of Article 13? So all the governmental documents, that may be act, that may be notification, order, rule, sub-rule, everything will come under the definition of law under Article 13. Now, constitutional amendment. Constitutional amendment is an exception. Constitutional amendment doesn't come under the category of law for relation with the Article 13. Then we come to directly the fundamental rights, and two legal principles very importantly we have to understand. Article 14 to 18 provides us with the right to equality. तो सब लोग कानून की निगाह में बराबर होंगे, समाज में भी बराबर होंगे. Article 14 states that state shall not deny anyone
equality before law and equal protection of laws. Now, what is the philosophy? This is inspired from UK doctrine, and this is from USA. Although this equal protection of law is basically an Aristotelian concept. So Aristotle, the Greek philosopher, उनकी philosophy के ऊपर based है ये. US के अंदर इसको doctrine बना के लागू किया गया है. Now, equality before law says that each and every person is equal before the law. सब कानून के सामने बराबर हैं. That means complete absence of any kind of privilege on any ground. किसी को किसी आधार पे कोई special privilege law की निगाह में नहीं दिया जाएगा. सुनने में ये काफी टेम्पटिंग लग रहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, बट दिस पर्टिकुलर लीगल प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अस ओनली द पेपर इक्वालिटी, because Aristotle once said that human society is inherently unequal and equal treatment under unequal circumstances will perpetuate the inequality only. So you will not able to achieve the equality in real terms. So this is basically having limitations, not to provide larger equality in the society. The limited concept, or also famously called as negative concept of the equality, because it doesn't provide any power to do some helpful to the needy person. Now comes the other philosophy that is provided under Article 14, the equal protection of laws. Now, what is equal protection of laws? That law would protect equally to the masses, but this particular theory gives us the power, or gives the power to the state for reasonable classification of the people. So state by this theory can reasonably classify the people, equally placed people, equally circumstance के अंदर placed people के लिए आप अलग अलग कैटेगरीज बना लें, और उन कैटेगरीज में प्लेस्ड लोगों को आप इक्वल ट्रीटमेंट दें और दूसरों को डिफरेंट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं. सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की थियरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वाजिब हो पाई कंट्री के अंदर. नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ कम. दोनों का कोई एग्जांपल हम देखें तो, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस एवरीबॉडी इज इक्वल एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस. नाउ द अडानी साहब विल कम एंड से कि देखो यार, मुझसे तो आप इनकम टैक्स भी हैवी वसूल रहे हो और कॉर्पोरेट टैक्स अलग से ले रहे हो, बट जो राजू रिक्शे वाला घूम रहा है उससे तो आप 0% इनकम टैक्स ले रहे हैं, बिकॉज इन इनकम टैक्स वी आर हैविंग स्लैब्स. सो अगर 2.5 लाख कमा रहे हैं तो कुछ नहीं देना है, 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आप 5%, 10%. सो वी आर हैविंग स्लैब्स, बट दिस पर्टिकुलर स्लैब सिस्टम इन इनकम टैक्स इज ऑन पेपर, at least at the ideal level, it is antithetic to the concept of equality before law. आपने तो प्रॉमिस किया था कानून के सामने सब बराबर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे discriminated treatment हो रहा है. Now how come this possible? Because of equal protection of laws. Law will protect equally, but it can protect the people by reasonable classification. So ये जो reasonable classification की गई है इनकम के आधार पे कि जो कम कमाता है उससे कम टैक्स, जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स ले लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. दिस इज पर्टिकुलरली बीन पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. नाउ वी नो इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस डेथ पेनल्टी, सो एवरी मर्डरर डजंट गेट द डेथ पेनल्टी फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ. व्हाई? देयर इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थियरी दैट जो भी केसेस, जो भी मर्डर के केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करेंगे, ग्रूसम मर्डर्स, लाइक आई बिलीव यू हैव हर्ड अबाउट दैट gruesome murder of a young lady at Delhi, cut into 35 pieces and thrown away at distant places. So this type of horrifying murder will be falling under rarest of rare theory, and the convict will get death penalty. But the murders which do not fall under rarest and rare theory, उनको punishment life imprisonment के तौर पे हो जाएगा या बाकी कोई punishment. So this is how you have classified the differently placed people into different circumstances. Then we come to Article 15, plainly non-discrimination. So there is a bar that on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, discrimination will not be allowed. Not only in the government premises, rather at public places. The discrimination arising out of these 5 grounds will not be allowed. But there are enabling clause. We call it enabling clause, that to enable the equality in larger sense. So this article particularly provides that
The government can bring the schemes or special provisions in favor of women and children. Then socially, educationally backward classes of people, including the SCs and STs, special provision may be brought in by the state. So these are called enabling provision. See, some people call that particular provision as exception, but under legal principle, constitutional spirit, constitutional morality, we do not call that exceptions, but we call it as enabling provision, which enables, which strengthens the main provision itself. Then comes the Article 16, especially carved out to give equal opportunity in public employment. सरकारी नौकरियों में सबको बराबर की opportunity देने के लिए. And this particular article promises that discrimination in government jobs will not be allowed on 7 grounds. 5 earlier one, religion, race, caste, sex, place of birth, and then residence and descent. इस आधार पे भी discrimination सरकारी नौकरियों में नहीं होगा. Particularly सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो हमने अभी रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला क्लॉज देखा था, under the legal principle of equal protection of laws, that is being manifested under Article 16 by clause 4. And it says that state may bring reservation policy in favor of backward classes of citizens who are not adequately represented in the government jobs. So this is basically an enabling provision. Again, how come enabling clause? Because the reservation policy is being provided under Article 16 to bring the disadvantaged section at par with the advantaged section. That means the socially and educationally backward classes of citizens need some affirmative actions from the state that they could be raised with social mobilization, educational mobilization, and also the opportunity in government job. So overall status would be mobilized to bring larger equality in the society. Now we move to Article 17, and untouchability is abolished and prohibited in any of its form. Remember, untouchability is not being defined in the Constitution, but any form, in any form, it has been abolished and prohibited, and also it is punishable offense in accordance with law. So Article 17 doesn't provide the punishment because Constitution is not a punitive law. The punishments are provided in punitive laws. So it just declared that it will be a punishable offense according with the law. So what laws we made? Untouchable Offences Act 1955, then the Civil Rights Protection Act 1976, and finally the SCs and STs Prevention of Atrocities Act 1989. These 3 pieces of legislation was brought in to criminalize the practice of untouchability. Accordingly, stringent punishments are provided to the offenders. Then the titles. So in independent India, to create a larger equality, titles being abolished. The state cannot provide titles to anyone. Like in the colonial regime, there were various titles like Sir, the knighthood, then Maharaja Dhiraj, Rajkumar, Rajkumari, Jang Bahadur. There are number of titles the Britishers used to give the people. So the superiority and inferiority complex will be a common perception in the society. But independent India, no title can be given by the state except, what is the exception? So academic and military titles are allowed. Military titles like the military ranks. So even after the retirement, a military personnel, Air Force personnel, they can carry the title with their name. There is a personality like Captain Amrinder Singh, the ex-CM of Punjab. So captain, the name was not given by the parents. Rather, this was the army rank. The Captain Sahab, the Amrinder Singh, attached the captain rank with his name even after the retirement. So they can carry. And other is academic. So doctors, advocates, जो हम बनने वाले हैं, we can carry this title with our name. So advocate, an academic title. This can be attached. This can be attached with the name itself. Then comes freedom, and 19 to 22 article
provides the protection in various type of freedom cases, and the very important Article 19. This gives us freedom of speech and expression, अभिव्यक्ति की आजादी. So it provides not only the speech and expression, alongside it also gives the freedom to assemble peaceably and without arms, then to form association, unions and cooperatives, to move freely throughout the territory of India, then to reside and settle in any part of the territory of India, and finally to practice any profession or to carry on any trade, occupation or business of one's choice. So different type of fundamental rights related to freedom are provided under Article 19, but we have to understand that what are the different aspects of Article 19. One, freedom of speech and expression. So it's not related to speech only. So any way, by any mean which you can use to express yourself, that is allowed under Article 19. So speech is one part, which is I'm using to convey the legal reasoning to you, but then it can be singing, it can be writing in newspaper or magazine or books, or it can be dance, it can be painting, it can be cartoons in magazine or elsewhere. So any legitimate form by which an individual can express himself or herself, it is a fundamental right under Article 19(1)(a) precisely. Then media. So media is not expressly written here, but media at the end of day is a medium of expression itself. So media also draws its power from freedom of speech and expression itself. And very interesting case there was, Bijoy Emanuel case. So Honorable Supreme Court also provided the citizen with the right to remain silent as a part of the speech and expression. So आप अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ बोल के नहीं करते हैं, खामोश रह के. गांधी जी मौन व्रत रख लिया करते थे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए. खैर मैं ये बिना मतलब ही आपको ज्यादा समझा रहा हूं. आप उस एज में आ चुके हैं जहां आप ये समझते हैं कि कई मामलों में शब्दों से ज्यादा, लफ्जों से ज्यादा खामोशी काम करती है. तो अगली बार अगर आपसे कोई फोन से पूछे कि नाराज हो क्या, बात क्यों नहीं कर रहे, तो यू कैन क्लेम that I am enjoying my fundamental right to remain silent. Please do not infringe on my fundamental right of remaining silent. So see, the various offshoots, the various derivatives which has came from the liberal interpretation provided to the fundamental rights by the Honorable Supreme Court and Honorable various High Courts as well. Then we come to this thing. We just discussed, okay, assemble peaceably without arms, association, freely moving, and any profession and occupation you can carry on, and speech and expression must there. But क्या ये सारे fundamental right आप absolute freedom के साथ use कर सकते हैं? As I said earlier, that government cannot infringe upon your fundamental right. But क्या reasonable restriction भी नहीं लगाई जा सकती है? This is wrong. These are not absolute. Fundamental rights are not sacrosanct. के उसको टच ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है. So how come it that reasonably restrict किया जा सकता है? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि freedom of speech and expression है, that doesn't mean कि I come and a group of people is there and I say कि चलो बैंक लूटेंगे. So this is basically an incitement of offense. This is section 120B IPC. This will result in criminal conspiracy. So to incite an offense, I cannot use freedom of speech and expression, fundamental right, as an excuse. Then okay, if I am not pleased with the government's policy, like any government, the state government or central government, so I may have the right, rather I have the right to criticize the government because of Article 19(1)(a. बट इस क्रिटिसिज्म के चक्कर में मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं. दैट मीन्स कि गालियों पे उतारू ना हो जाए. ओके, इफ आई हैव द फ्रीडम टू राइट अ स्टोरी और कंपोज अ पोएम, बट उसके जरिए मैं अश्लीलता नहीं परोस सकता हूं. ऑब्ससिनिटी विल नॉट बी प्रोमोटेड इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? सो गवर्नमेंट or the parliament by law can restrict the fundamental rights or regulate the fundamental rights on the grounds of security and integrity of the India. So you may not use your freedom of speech to orate like things ke bharat tere tukde honge.
सो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, उसको कोई खतरा नहीं पैदा करना है. देन फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज, सो यू विल नॉट स्पीक अ वर्ड against this thing. Then morality, the moral standards of the society. The defamation मानहानि, किसी की reputation में loss cause करना. Then contempt of court, you must behave properly beneath the court. So अवमानना, कोर्ट ने अगर कुछ कहा तो उसको मानना है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना है. Then the incitement of offense, which I just talked about. So मैं कहना ये चाहता हूं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि फ्रीडम है फंडामेंटल राइट्स के लिए, बट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड के अंदर फ्रीडम है. सिंपल चीज ये है कि अगर मुझे आजादी है अपने हाथ इस तरह से घुमाने की, आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये मेरी आजादी वहीं तक है जहां से आपकी नाक नहीं शुरू हो जाती, क्योंकि जहां से आपकी नाक शुरू हो जाती वहां पे आपकी अपनी आजादी है. और कंप्लीट फ्रीडम अगर आप लोगों को दे देंगे, एब्सोल्यूट फ्रीडम आप दे देंगे, दैट विल रिजल्ट इन एनार्की. सबकी आजादियां आपस में टकराती फिरेंगी और फिर किसी की आजादी सलामत नहीं बचेगी. सो गवर्नमेंट हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स राइट एंड द सोसाइटल राइट. देन वी कम टू आर्टिकल 20, द प्योर लीगल मैटर, and this is highly useful in criminal laws. So how come it is used in criminal laws? That three things are there and the citizens are protected against these things. So just convey one thing, important thing, that these these three facilities are not provided. Rather, the masses are protected against the operation of these three phenomena. One is ex post facto law in criminal legislation. Another is double jeopardy, that is not allowed, and self-incrimination again is not allowed. Now, what is the article? It is protection in cases of conviction. So conviction is a state when an accused is proved guilty in a court of law beyond reasonable doubt. वो पता लग गया इसने क्राइम किया, नाउ सजा होनी है, कन्विक्ट किया जाना है, उसको कितनी सजा होनी है, वो स्टेज है. तो जब सजा हो रही है उस वक्त क्या? One more thing, there is no right against conviction, there is just protection against conviction. Now what it comes, ex post facto law. What is this legal principle? Ex post facto law, that is not been allowed. So that means criminal laws cannot be given effect retrospectively. बैक डेट से क्रिमिनल लॉस को लागू नहीं किया जा सकता है. जिस दिन वो कानून बना है उस दिन या उससे आगे ही वो लागू होगा. बट वेट, क्या सिविल लॉ में भी ऐसा होता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज सिविल टाइप. सिविल के लिए ये चीज लागू नहीं होती है. सिविल लॉज कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन. जैसे टैक्सेशन बैक डेट से लागू किया जा सकता है कि हम 5 साल पहले की डेट से इसको लागू करते हैं. क्रिमिनल लॉ बैक डेट से लागू नहीं कर सकते हैं. रिमेंबर द निर्भया केस, when that dreadful, inhuman, and whatever the word you can use from the vocab, but that dreadful crime happened. At that time, IPC was having maximum 10-year imprisonment for rape. Now, many people opined, and I was surprised at the news channels, the legal representative, they opined that करना क्या है, आईपीसी में एक अमेंडमेंट कर देनी है और जहां 10 साल लिखा है वहां पे डेथ पनिशमेंट लिख दें और इनको फांसी पे टांग दें. Was it possible? No, it was not possible because they were having the protection in cases of conviction under Article 20. It is their fundamental rights. Even the criminals have the fundamental rights that must be protected by the law of the land and the Supreme Court. So those accused in Nirbhaya case could not be given death penalty because when they committed that crime at that moment of time, the punishment for their crime was 10-year imprisonment maximum. But इस केस के अंदर तो कैपिटल पनिशमेंट हुआ है. 5 लोग थे, उनमें से एक राम सिंह तो फांसी खुद ही ले गया था. इट इज अलेज्ड कि तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा ली. बाकी 4 लोगों को फांसी हुई. अच्छा, एक माइनर भी था, उसको 3 साल की सजा के बाद छोड़ दिया गया. हम 4 लोगों की बात करें. हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4 लोगों को इकट्ठे फांसी दी गई. निर्भया केस के अंदर फांसी क्यों हुई? क्या केस बहुत सेंसिलाइजेशन था, मीडिया में बहुत चला गया था? लॉ इन सब चीजों का टेक केयर नहीं करता है. लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा. वी नो दिस थिंग. सो व्हाट इज द मैटर कि मैं जो अभी कह रहा हूं कि फांसी नहीं हो सकती थी फिर भी हो गई. द क्राइम चेंज्ड. With all due respect to that deceased lady,
that lady died, and the crime which was earlier was of rape later turned into rape coupled with murder, and for murder under IPC 302 we were having capital punishment. So now the crime has got changed, then they were convicted and provided punishment with the capital punishment. With all due respect again, if that lady could survived, उनकी डेथ ना हुई होती, तो crime would be only the rape. At that juncture, capital punishment नहीं हो सकता था because of protection of Article 20. Now we come to further and double jeopardy. So double jeopardy plainly meaning कि एक crime के लिए 2 बार ट्रायल करना और 2 बार सजा देना. Now we come to this thing. This is not allowed. That means for one single act of crime there will be one criminal trial only and one punishment only. एक क्राइम के लिए, एक सिंगल एक्ट ऑफ क्राइम के लिए आप 2 बार ना तो केस चलाएंगे और ना ही 2 बार किसी व्यक्ति को सजा करेंगे. Then it comes to self-incrimination. So any accused of criminal offense cannot be compelled by the state to give any statement which will be later used to incriminate him or her. जो उसको बाद में क्रिमिनल साबित करने के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट उससे कंपेल करके नहीं लिया जा सकता है. सो ऑल दिस फिलॉसफीज ऑफ थर्ड डिग्री, टॉर्चर, फते दे पटे, दिस इज ऑल इलीगल एंड अटर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दिस इज ऑल इलीगल. नाउ वी कम टू आर्टिकल 20. सो 2-liner article but magical one. So this is the article, this is the most evolved article under fundamental rights. Today it is saying that if you cannot secure any of your fundamental right in any article, any of your right in any fundamental right, then you relate it with right to life and personal liberty. You will get a security. Now what the article says, that state shall not take away the right to life and personal liberty except according to the procedure established by law. सो स्टेट लाइफ और लिबर्टी को स्नैच अवे नहीं करेगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप कानून वायलेट नहीं करते हैं. विच लॉ? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो इफ यू वायलेट एनी प्रोसीजर दैट इज अंडर द एस्टैब्लिश्ड लॉ, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू द लायबिलिटी according to the law. So as we are having capital punishment for certain offenses, the life would be snatched away. And for traditional crimes, we are having imprisonment of various terms, so the personal liberty will be snatched away. But what other legal principles we can derive, which is very important for our examination purpose, that is the established procedure of law and due process of law. So we are having the procedure established by law only. Okay, so this due process of law we are not having under our constitutional scheme, but this is provided under USA, in the USA constitution. So this is USA doctrine. Now we come to this thing, that what does it mean procedure established by law? As I earlier said, that if any law violates the fundamental rights, that shall be challenged in a court of law where the constitutionality will be checked by the court. So this is a case of judicial review. Now, all those countries which follows the procedure established by law, which is a UK doctrine, under this philosophy or this doctrine, the court are having limited judicial review. How come? The court will check the piece of legislation from the viewpoint of what? That okay, ये बताइए अथॉरिटी थी कि नहीं थी. पार्लियामेंट ने जिस टॉपिक पे लॉ पास किया है वो सेंटर का ही टॉपिक था, कहीं स्टेट के टॉपिक पे तो नहीं कर दिया. देन प्रोसीजर फॉलोड, दैट इज ओके, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट असेंट हैज बीन टेकन और नॉट. एंड देन इफ एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैपन और नॉट, दैट्स इट. इफ ऑल दीज क्राइटेरियाज आर ओके, if no unconstitutional thing, procedure is okay and authority is okay, then the court cannot stop such a law. The court will not check the quality of the law, the reasonableness, the equitableness, the justness of the law will not be checked. On the other hand, the country which follows due process of law, the USA doctrine, especially if we say the USA. So USA में जब ये केस आएगा इस तरह का जो हमने भी एग्जांपल लिया, जहां पे कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं किसी पीस ऑफ लेजिस्लेशन का, देन कोर्ट विल चेक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अथॉरिटी, प्रोसीजर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. अल्ट्रा वायरस वो भी चेक करेंगे. बट वन स्टेप फर्दर, द कोर्ट हियर will also check
द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो लॉ का प्रोसीजर है ये कैसा होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था? लॉ का प्रोसीजर मस्ट बी रीजनेबल, जस्ट, फेयर, इक्विटेबल. So here the court also checks the quality of the law. So this gives greater power, much greater power to the judiciary to check an enactment of the legislature. That's why in US, the US Supreme Court is also called as third chamber of the Congress. So उनके लेजिस्लेचर के थर्ड चैम्बर के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि लेजिस्लेशन की क्वालिटी उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी चेक हो रही है, सीनेट में भी चेक हो रही है, और फिर जुडिशरी भी चेक कर रही है. बट ऑन द अदर हैंड इन इंडिया, जुडिशियल scrutiny will not go ahead of these procedural aspect. They cannot question the quality of the law. So this established procedure of law gives protection only against the executive arbitrariness. So they cannot check the legislative prudence that is left, that okay, parliament se bana to अच्छा ही होगा. But on the other hand, in US, this due process of law gives us the protection, or gives the American the protection against executive arbitrariness as well as legislative arbitrariness. Now, why we are talking the US doctrine here? Because we happen to hear a case called Maneka Gandhi versus Union of India 1978. और इस केस के अंदर the Indian Supreme Court somehow, without mentioning the due process of law, without mentioning this, they invoke the US doctrine. How come? The Honorable Supreme Court observed that any law which results in gross violation of fundamental rights will be checked by the judiciary, and all the laws which deal with the fundamental rights must be reasonable, must be fair, must be just, and must be equitable. So without mentioning the due process of law, the judiciary invoked the US doctrine in Indian case. और इसके बाद तो फ्लड गेट्स ओपन हो गए. जिस लॉ से भी एतराज होता था लोगों को, वो लेके कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और फिर तमाम तरह के राइट्स को फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21 के अंदर. So many things. MC Mehta versus Union of India. Right to have clean environment is a fundamental right. क्योंकि clean environment नहीं होगा तो इसी तरह से गले और फेफड़ों की तकलीफें आएंगी. Next, many cases like right to have emergency medical help, right to go abroad and come back safely. All these are ensured under Article 21 because they are connected with right to a qualified life. बाबा रामदेव जी के केस में तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि right to have a sound sleep is a fundamental right under Article 19, क्योंकि sound sleep बहुत लाजमी है एक क्वालिटी लाइफ के लिए. So many shades of the fundamental right and its judicial interpretation. Then we come to Article 21A. This is just quite simple, that 86th Constitutional Amendment 2002, 86th Amendment 2002 bring this fundamental right which ensure the free and compulsory education to all the children between the age group of 6 to 14 years. So right to education came with 86th Amendment, resulted in Article 21A. Let's go further. Article 22, protection in cases of arrest and detention. So Article 22 dealt with the protection in cases of conviction. Now we have the protection in cases of arrest and detention. So this article provides two types of detention. Well, one is punitive detention, that is always with trial, and there is preventive detention to prevent a further crime or furtherance of any crime, and that is without trial. Trial means judicial trial doesn't start with this detention, but with punitive detention, judicial trial almost begin within 24 hours. How come? So what are the facilities that any person who is being arrested? So it is the responsibility of arresting authority to give the details of arresting grounds. किस लॉ के अंदर किस लॉ की वायलेशन पे अरेस्ट किया जा रहा है. Then that arrested person will have the facility of a legal help, lawyer's help of one's own choice, and this is a fundamental right. Then
that accused, that arrested person must be presented before the nearest magistrate within 24 hours of the arrest. अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो इलीगल हो जाएगी डिटेंशन. हाँ, ये अलग बात कि इस 24 घंटे के अंदर ट्रैवलिंग टाइम या फिर पब्लिक हॉलीडेज को कट कर दिया जाता है. मान लीजिए चंडीगढ़ से कोई क्राइम करके तमिलनाडु चला गया और चेन्नई से अरेस्ट हुआ, तो भाई चंडीगढ़ पुलिस या पंजाब पुलिस के पास ऐसे रिसोर्सेज तो है नहीं कि चॉपर करके उसको रातों रात ले आए. तो इंडियन रेलवे से आएंगे, स्लो स्लो आएगी, तो उसमें 24 घंटे लैप्स कर जाएंगे. सो ट्रैवलिंग टाइम को कट कर दिया जाएगा. इसके बाद आप मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करेंगे, तो इसके बाद दैट अरेस्टेड पर्सन विल बी इन पुलिस कस्टडी ओनली till the time given by the magistrate itself, which is called as police custody. So these are the protection in cases of arrest and detention. And preventive detention, which is being made under special preventive detention laws, not under IPC, like UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. So under these preventive detention, all these facilities will not be available. So no mentioning of grounds, no lawyer's help, not even presenting it before the magistrate or as a police custody. डायरेक्ट 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप रख सकते हैं. एंड देन हाई कोर्ट के जो जज बनने के लिए क्वालिफाइड लोग हैं, उनका एक स्पेशल पैनल बनेगा और उनकी परमिशन के बाद ये डिटेंशन 3 महीने और भी आगे ले जा सकते हैं. 3 महीने तक तो सीधा प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा पार्लियामेंट इज ऑल एम्पावर्ड टू मेक लॉज ओवर प्रिवेंटिव डिटेंशन टॉपिक्स. सो ये 3 महीने के पीरियड को पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर 6 महीने 9 महीने कितना भी किया जा सकता है. सो दिस इज अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन. नाउ वी मूव टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. So, 2 articles 23 and 24. Plainly, Article 23 prohibits traffic in human being and forced labor. So, traffic in human being, इंसानी खरीद फरोख्त नहीं होगी, इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकेगा. And साथ ही में forced labor, that is also called as begar or the bounded labor. So, this is being prohibited and punishable according with the law, as the untouchability was punishable according with the law. Now the important laws in this respect has been made: the Immoral Trafficking Prevention Act 1986, the Bounded Labor Abolition and Rehabilitation Act 1976. But remember, a state may impose compulsory service on the citizens, like किसी भी काम के लिए कंपलसरी सर्विस, और उसके बदले में स्टेट चाहे तो रिम्यूनरेशन दे चाहे ना दे, बट इसको 23 की वायलेशन नहीं माना जाएगा. नाउ वी कम टू दिस थिंग, आर्टिकल 24, which prohibits the child labor, but not in its entirety. So under Article 24, it is mentioned that child below the age of 14 years cannot be employed in factory, mine or hazardous employment. So सबसे पहले तो child की definition 18 years पे नहीं की गई है. यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया 14 साल तक का बच्चा, और उसको फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं मिलेगा, बट दैट child can be employed in non-hazardous employment like tea shop, dhabas, restaurant, domestic help. So this is plainly the article what it says. But the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, this law especially brings out the punishment जो भी child labor करवाते हैं. और इसी एक्ट के अंदर 2016 में एक important amendment हुई है, जिसके अंदर this is being provided that child cannot be employed in any occupation except where he or she helps his family. फैमिली ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय किया जा सकता है, और किसी ऑक्यूपेशन में अभी चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं. नॉट इवन डोमेस्टिक हेल्प, टी शॉप, ढाबा, रेस्टोरेंट. हाँ, खुद का फैमिली बिजनेस है तो उसमें काम करवा सकते हैं. और साथ ही 14 से 18 की उम्र के लिए अडोलेसेंट कैटेगरी क्रिएट की गई है, दैट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. और अगर फिर भी कोई एम्प्लॉयमेंट करवाता है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर, तो 20 से 50,000 तक का फाइन है और 6 महीने से 2 साल तक की जेल है, एज पर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट. नाउ वी कम टू द रिलीजियस फ्रीडम. सो 25-8 provides us religious freedom. Article 25 provides us that the people are having freedom of consign and free profession, practice and propagation of religion. So
any person in India belong to any religion, it can freely profess that I belong to this particular religion, then practice the religion. All the rituals, all the ceremonies related to religion can be celebrated by the persons. Then also the propagate. So धर्म प्रचार भी कोई व्यक्ति अपने धर्म का कर सकता है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट या फिर जो कीर्तन दीवान वगैरह चलते हैं. बट आर्टिकल 25 का बेनिफिट क्या मुझे तभी मिलेगा जब मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता हूं. इफ आई एम एन अथीस्ट, मैं मानता ही नहीं धर्म को, मैं कहता हूं मैन मेड है, इफ आई से दिस, देन क्या 25 का प्रोटेक्शन मिलेगा? यस, बिकॉज वर्ड कंसाइंस देयर योर इनर वॉइस. सो योर inner voice, whatever it says, that okay, I believe in science, Big Bang theory, no religion, no God, then okay. I say religion, I will do the murti puja, then okay. I'll believe in some holy book, then it is okay. So even if I say कि मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे तो जो है पिताजी महाराज, the Derawad, that is also okay according to Article 25. But remember, always regulation is there. So this free profession, practice and propagation is subjected to public order, morality and health. So your any religious practice will not result in violation of public order or the morality, the moral standards of the society and the health scenario. If it violates, then that particular religious practice will be stopped, strictly stopped by the state. Then one more important thing, this Article 25 gives the people right to propagate their religion, but this doesn't give the right to convert other people into own religion. Okay, Article 25 की philosophy को समझ लेते हैं. That if I want to convert into any religion, then on my free will I may convert into any religion because I can follow any religion, है ना, any religion. But this doesn't give rise to a right to me to convert other people into my religion. तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, धर्म परिवर्तन किसी के कराने का अधिकार नहीं है. Then we move to right to manage religious affairs. So all the religious denominations, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो अपने धर्म को खुद मैनेज कर सकती हैं. रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं और साथ ही में मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ यूटिलाइज भी कर सकती हैं. देन आर्टिकल 27 दैट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड रिलीजन. सो इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स. मीन्स no such tax can be implemented in this country, proceeds of which are specifically utilized or dedicated to the conservation or promotion of any religion. Say government brings in GST and tomorrow government makes a rule that GST का जितना भी कलेक्शन हुआ उसका 2% जाएगा कोई भी लाइक हिंदू टेम्पल्स की रेस्टोरेशन के लिए. तो क्या ये लागू किया जाएगा? आंसर इज नो. किसी भी टैक्स के प्रोसीड्स को रिलीजन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. क्लियर? बट अ कैवेट इज देयर. टैक्स तो सीधा सरकार डेडिकेट नहीं कर सकती है रिलीजियस पर्पस के लिए. बट व्हाट इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इटसेल्फ, सरकारी खजाने से खर्च करें, दैट डजंट ब्रीच आर्टिकल 27 बिकॉज वी आर हैविंग अ पॉजिटिव सेक्युलेशन. सरकार धर्म के लिए बिल्कुल धर्म से टोटली डाइवॉर्स नहीं, धर्म के लिए कुछ काम तो कर ही सकती है. हाँ, टैक्स का डिवोल्यूशन, डायरेक्ट टैक्स का प्रोसीड को डिवॉल्व कर देना, दैट इज नॉट बीन अलाउड. देन कम आर्टिकल 28 एजुकेशनल एंड रिलीजियस राइट. दिस इज नॉट एजुकेशन एंड रिलीजन. एजुकेशन फील्ड के अंदर रिलीजन की टीचिंग प्रीचिंग क्या होगी कि नहीं होगी. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 4 कैटेगरी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बांटता है. 1 होली गवर्नमेंट, मतलब होली गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. देन देयर आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड, सो दिस इज प्राइवेट बट एफिलिएटेड एंड एडेड बाय द गवर्नमेंट. देन अंडर रिलीजियस ट्रस्ट, सो रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड के अंदर बने हुए. रिमेंबर द थिंग, पूरी तरह से सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर कोई रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है, टोटल नो. बट इन
रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा सकते हैं और रिलीजियस पढ़ाई भी कराई जा सकती है, बट कंपलसरी नहीं की जा सकती है. देन कम्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्पेशली बने हैं किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर. वहां पे रिलीजन पढ़ाया भी जा सकता है, रिलीजियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कराई जा सकती है और कंपलसरी भी की जा सकती है. देन कम्स द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सो आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स that any person, any group of citizen which is having, any group of citizen, only for citizen, not persons, okay, any group of citizen which are having distinct language, script and culture shall have the right to conserve the same. So three things are protected: language, script and culture. Then comes article 30 which gives right especially to the minorities, minority on the basis of religion and language. So religious minorities and linguistic minorities are having fundamental right to establish and administer minority educational institutes. In those माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिस कम्युनिटी ने बनाया है अपने कम्युनिटी के बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व कर सकते हैं. CMC लुधियाना, there is a Christian medical college, that is the same example. Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia Delhi, these are all the glaring example of minority educational institutes. So these are basically the fundamental rights from 14 to article 30. So we have discussed the equality, the freedom against exploitation, then the religious freedom, then cultural and educational rights. But what if these rights are violated? We have understand a principle called ubi jus ibi remedium. Where there is a right, there is a remedy. So what is the remedy if a state violates these rights? So remedy comes in form of article 32, which is a writ jurisdiction of Honorable Supreme Court. So this comes that plainly if any law or any administrative action violates your fundamental right, so you have not to, you are not supposed to go thanas and kacheris and all that thing, but you are having a fundamental right to directly approach the Supreme Court, and Supreme Court is having a constitutional duty to provide the remedy for your violated right and reassure that further your rights will not be violated. So what can be done by the Supreme Court? Okay, so Supreme Court may pass any order or direction and writs. So this article is more famous for the writ jurisdiction. So writ in itself are qualified order. Every writ is having some meaning and a purpose to solve. So that's it, a qualified order. Okay, so this is being inspired by the UK philosophy where the queen were having some special order rights. Now we are having 5 types of writs, that is the habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. So all having different meanings. Let's go by habeas corpus. Now what is habeas corpus? Habeas corpus plainly means that you may have the body, जिसके भी खिलाफ लागू कर रहे हैं, आपके पास ये बंदा है, और ये किस केस में लागू होती है? इलीगल डिटेंशन के केसेस में. सो कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन करके रखते हैं तो उस व्यक्ति के रिलेटिव या उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाके हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल कर सकता है. कोर्ट विल इशू द हेबियस कॉर्पस. उस अथॉरिटी को कहा जाएगा आप उस बंदे को लेके कोर्ट के अंदर आइए, और कोर्ट के अंदर डिसाइड किया जाएगा that detention was legal or illegal, and needless to say, if detention is illegal, the person would be set free. So this habeas corpus will be used to restore the freedom of a person. Now come to a legal principle that can be utilized in various of the laws. Locus standi. Now what is locus standi? That's a legal principle, that is what is your ground to stand before the court. What is your cause to stand before the court? Plainly मैं ये कहना चाहता हूँ, there are some suits, there are some cases जिन पे locus standi का principle apply होता है और कुछ cases में ये apply नहीं होता है. जिन cases में भी ये apply होता है उन cases में stranger to the suit cannot come to the court. The third party cannot come to the court. For example, there is a couple in your neighborhood जो कि रोज बहुत ज्यादा लड़ते हैं, चीख चिंगाड़ा जो आप कर लीजिएगा. ओके, नाउ
टू गेट डाइवोर्स, इस कपल में से दोनों में से किसी एक को कोर्ट जाना होगा. यू बीइंग एज अ नेबर कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड आस्क सर ये मिस्टर एंड मिसेज है, इनका डिवोर्स करा दीजिए. व्हाई? लोकस स्टैंडी अप्लाई. द कोर्ट विल आस्क लोकस स्टैंडी, व्हाट इज योर ग्राउंड टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट? Let the couple or one of the party come to the court to get the remedy. You are not eligible to call the remedy on their behalf. But किन केसेस में लागू नहीं होता है? There's famous cases of PIL, public interest litigation. So उस पे अगर locus standi apply नहीं होता है, then any third party, stranger to the suit, can also come to the court on behalf of the interest of larger section of the society. So habeas corpus में locus standi apply नहीं होता है. Now, this mandamus means the command or we command. This can be instituted only against state, private के खिलाफ लागू नहीं होगी, and that result in to do your lawful duty. एक SHO साहब हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं. So, जिसके भी legal right violate हुए हैं, because locus standi apply, so only concerned party can approach to the court. So, the aggrieved party may approach to the court कि सर SHO साहब को कहिए कि वो अपना काम ढंग से करें, and court will issue mandamus that do your lawful duty carefully, or restraint, put restraint on that particular authority that do not do something which is not desirable as part of your duty. Then we come to prohibition and certiorari. Both the writs are related to breach of jurisdiction. Breach of jurisdiction by judicial or quasi-judicial bodies. So this is a case of excess done by judicial authority like courts, like tribunals. Now, if any court takes up a case beyond its jurisdiction, beyond its power, then if case is running, the matter is pending before the court, then the aggrieved party may approach to the Supreme Court and ask for prohibition. That sir, case is running, please order prohibition. Court will order the prohibition, that means prohibit. प्रोसीडिंग्स को यहीं रोकिए और सही कोर्ट के अंदर भेजिए. बट इफ केस इज डिसाइडेड, नाउ द अग्रीड पार्टी में अप्लाई इन द सुप्रीम कोर्ट टू certiorari. Now court will order certiorari, that means to certify the quashing of the judgment. So already given judgment will be quashed and the court will be sent to a court which is having proper jurisdiction over that matter. So both prohibition and certiorari deals with the breach of jurisdiction by a judicial or quasi-judicial body. Then we come to quo warranto. That means what is your authority? What is your qualification? For what purpose? To hold a public post. So if there is a public authority, public post, and a person assume that office despite the fact that he doesn't or she doesn't have the necessary qualification desired to that post. Suppose a post is having minimum qualification of graduate, but that person who is being in charge of that post is not graduate, or he or she has forged the document, जाली बनवा लाया, तो qualification तो नहीं है इसके पास. In that case, anybody can go to the court. Obviously, locus standi doesn't apply. And then court will ask for issue the writ of quo warranto. Ask what is your qualification. Either prove your qualification or the quo warranto will result in the vacating of that office. उस office को खाली करवा देंगे court order के ऊपर. So 5 writs are there. We have understand the 5 writs, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. Now let's practice some question on the discussions we have made now. So, there is a legal principle that under the Indian Constitution, everybody shall be equal before the law. We are talking about Article 14. Okay, the factual situation. The Income Tax Act happens to provide that those whose annual income is up to 1,50,000 shall pay 10% of their income as tax. Okay, 1.5 लाख पे 10% देना पड़ेगा. And those whose annual income exceeds 1,50,000 shall pay the tax at the rate of 20%. Okay, 1.5 लाख से ऊपर वाले 20% देंगे. Those citizens whose annual income exceeds 1,50,000 challenge this legislation on the ground that it is a violation of the principle of equality before law. ये तो वही एग्जाम्पल हो गया जो हम अपनी क्लास के अंदर अडानी साहब का और राजू रिक्शे वाले की बात कर रहे थे. मेरा ख्याल है आंसर पे तो आप अभी पहुंच गए होंगे. Now we come to this thing that
They will succeed because the law discriminate against the people who earn more than 1,50,000 per annum. No. Remember, equal protection of laws, progressive taxation. Then they will not succeed because the people who earn more than 1,50,000 are not equal to the people who earn less than. No, this is not the answer, not the correct explanation. Okay. They will not succeed because this law enables the government to equalize the incomes of the people in the country. नहीं, equalize कहाँ हो रहा है भाई? कोई गरीबों को अमीरों का पैसा छीन के थोड़ी दे रहे हैं. Not allowed. Then they will not succeed because citizens earning less than 1,50,000 are not equal to those earning above it. Taxes must vary. The concept of progressive taxation, reasonable classification. That's why they will not succeed in their suit. Then we come to another legal principle. Okay, the Constitution of India guarantees freedom of speech and expression to all the citizens, subject to the right of the state to make a law and impose reasonable restrictions on this freedom in interest of what? The sovereignty, the integrity, the security, friendly relation with foreign states, the public order, decency, morality, and in relation to contempt of the courts, defamation and incitement of offense. So plain, the legal principle says कि okay, freedom and speech and expression है but absolute नहीं है. तो आप देखें कि बाकी की 4 लाइन के अंदर सिर्फ reasonable restriction के ground ही prescribe किए हुए हैं. Now, the factual situation. Twinkle TV, oh nice name. Twinkle TV, a Hong Kong based satellite TV company, introduces a new channel called Channel XXX, which can be viewed in India. Fair enough. It is meant for adults since it telecast only adult films, so not for minor one. The government of India passes a law and bans viewing of this channel and other similar channels in India because of obscenity. Then it also makes reception and circulations of such programs by cable TV operators a punishable offense. तो वो केबल वेबल वाले भी नहीं दिखाएंगे. Then this is likely to result in considerable financial loss of cable TV operations. तो उनको तो loss होना ही है. Why? Throughout the India, because they were expecting massive viewership for channel XXX. उनको तो लगा सब लोग देखेंगे बैठ के यहाँ पे, जितने भी अडल्ट्स और फिर माइनर इलीगली देखेंगे. तो उन्होंने कहा यार हमारा तो आर्टिकल 19(1)G फ्रीडम ऑफ कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस वो हार्म हो रहा है. ठीक है जी. सो ऊपर से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम तो सिर्फ एक्सप्रेस ही कर रहे हैं, वो वायलेट हो रहा है. सो व्हाट कैन ओके द केबल ऑपरेटर फेडरेशन, अभी है स्टोरी है. In New Delhi filed a writ petition in the Supreme Court challenging the validity of the new law as contradictory to freedom of speech and expression, which we were talking about. What could be the main argument on behalf of the government to justify their action? So plainly, government अपने आप के justify कैसे करेगी, इस ban को justify कैसे करेगी? So it goes, the government has all the power to allow or to stop telecasting of a new channel in the country. This is arbitrary, okay? जिसके हमारे पास power हम तो करेंगे. This is not done. Lawfully justify करना है अपने आप को. So it goes, the state can impose reasonable restrictions in the interest of decency, morality on the telecast of channel showing the adult films. This is the most reasonable justification. Why? Article 19 clause 2 itself provide the grounds on which a state can put reasonable restriction on the enjoyment of fundamental right themselves. Next is, there is a legal principle. The Constitution is supreme. Okay, we agree. And all the laws in violation of the provision of the Constitution are void. Constitution के दायरे में तो रहना ही पड़ेगा. हमने पिछली क्लास में बात की थी. A client can exercise his fundamental right to have a lawyer of his choice, provided that particular lawyer is in a position to defend him. Now this is interesting. Article 22 we discussed about. और ये कहा गया कि किसी भी अक्यूज को जब अरेस्ट किया जाएगा, that person will have the fundamental right of legal help from the legal practitioner of its own choice, of his own or her own choice. But एक और कैवेट इसमें शामिल किया, provided that जो लॉयर उसने चुना है, particular lawyer is in position to defend him, वो खुद कैपेसिटी में हो उसको डिफेंड करने के लिए. What is the factual situation? What is the story? The constitution of a country A, so hypothetically any country है ना, confers upon its citizen the fundamental right to be presented by a lawyer of their own choice in
the criminal proceedings. A citizen Sunil, accused of a crime, engaged a famous criminal lawyer called Singhania to defend him. Just one day before the trial was to begin, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, Singhania was raided by the income tax authority. अच्छा, वकील साहब पे खुद ही रेड पड़ चुकी है. And he was detained by them, the income tax officials, in that connection. अच्छा, खुद ही वकील साहब अरेस्ट हो चुके हैं. Sunil moved a petition in the court that he was entitled to be presented by Singhania and therefore the letter should be released so as to enable him to argue the former's case. अच्छा, यहां पे accused अपने वकील को छुड़ाने के लिए रिट पिटीशन डाल रहा है. तो कौन हेल्पर कौन है और हेल्प किसकी हो रही है, ये कंफ्यूजन में आ चुके हैं. ओके, सो प्लेनली जो क्लाइंट था उसने कहा कि मेरे वकील को छोड़ो, जेल से बाहर निकालो और ये मेरा केस लड़ेगा, क्योंकि मेरा राइट है, मैं अपने पसंद के वकील से ही अपना केस लड़वाऊंगा. इस केस में क्या होगा, दैट सुनील विल सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज फंडामेंटल राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग वायलेटेड ड्यू टू डिटेंशन ऑफ द क्रिमिनल लॉयर. सॉरी सर, ये नहीं है. अगर ऐसा हो जाए तो कभी कोई वकील अरेस्ट ही ना हो, जेल ही ना जाए. जैसे ही किसी वकील को अरेस्ट किया जाएंगे, वो अपनी तरफ से कोई क्लाइंट भेज दिया करेगा कि जाओ पिटीशन डाल दो, हमें छुड़वाइए और हम आपके केस लड़ेंगे. ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. ये ब्लैंकेट जो एक प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये नहीं होती है. देन द लॉयर इज नॉट रीजनेबल, द लॉयर इज नॉट इन रीजनेबल पोजीशन टू डिफेंड हिम, सो हिज पिटीशन वुड बी रिजेक्टेड. प्लेन सिंपल आंसर. वकील साहब पहले अपने को तो छुड़वा लें, तब वो अपने क्लाइंट को छुड़वाएंगे. ही इज द वकील साहब, सिंघानिया साहब, इज नॉट इन पोजीशन टू defend his client's case. वो तो खुद arrested है. Then there is a legal principle. Right to carry on any occupation, trade or business is a fundamental right under Indian Constitution. Article 19(1)(g), plain. The state is under an obligation under the DPSP to organize agriculture and animal husbandry on scientific lines. अब स्टेट की जिम्मेवारी है कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री करवाइए. And towards that goal, take steps to prohibit cow slaughter. Okay. So here, the state prohibited the cow slaughter. तो ये नहीं होगा basically. Okay. Factual situation. The state of Uttarakhand passed a legislation totally prohibiting the cow slaughter. A butcher trading in the meat of all animals, including the cows, challenged this legislation as violating his fundamental right to carry on his business. Decide the case. काउ स्लॉटर पे बैन है. बुचर ने कहा कि मेरा बिजनेस रोकने के लिए कानून है और मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. What could be the answer? The state of Uttaranchal cannot make a law taking away any fundamental rights. Such law is null and void. No, sir. Reasonable restriction put कर सकते हैं. The state can prohibit cow slaughter to organize animal husbandry on scientific lines. This is again not an obvious answer. No sense. The right to carry on any occupation, trade or business is subjected to reasonable restriction. Yes, it is true. Banning the cow slaughter is much a restriction, be better animal husbandry protection, and it is within the power of the state. So, what is the settled law? That state may bring the ban on cow slaughter. So, this falls under reasonable restrictions. Now, we discuss the legal principles, legal maxims behind the fundamental rights, the constitutional philosophy behind the fundamental rights, and also practice some of the questions of legal reasoning arising out of the fundamental rights and constitutional premises. Now, as a ritual, we understand some of the legal maxims. Legal maxims, and today we are having a list. One is Grottes dictum, that means determination of question at issue. Then homo potest esse habilis at inhibilis dervisis temporibus. Long one, na? Meaning बहुत आसान है. That a man can be capable and incapable at different times. Remember, we discussed the law of contract के अंदर competence to contract, and we discussed that insanity makes you not eligible to make contract. बट हमने ये भी बात की थी कि जो इंसैनिटी का क्लॉज है, अगर कोई व्यक्ति कुछ टाइम के लिए इंसेन है और कुछ टाइम के लिए सेन है, तो जिस टाइम में वो सेन है
उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जिस टाइम में इंसेन है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल कैपेसिटी नहीं रख सकता। उससे रिलेटेड है दैट अ मैन कैन बी केपेबल एंड इनकेपेबल एट डिफरेंट टाइम्स। देन ignorantia facit exuat. Ignorance of fact is an excuse. Remember, ignorance of fact is an excuse. लेकिन इससे पहले क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ignorantia juris non excusat. That means ignorance of law is no excuse. So remember, ignorance of law is नो एक्सक्यूज। कल को आप कह दें जाके कि अच्छा जी कत्ल करने के लिए सजा होती है, मुझे तो इस कानून का पता नहीं था, तो क्या ये एक्सक्यूज वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा। बट याद रखें, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। देन इन डूबियो पार्स मिटियोर एस्ट सिक्वेंडा, दैट मीन्स in doubtful cases, wherever there is doubtful cases, beyond reasonable doubt कुछ prove नहीं हो रहा है, in those cases the most equitable view is to be followed. Sensible. जब beyond reasonable doubt कुछ नहीं prove हो रहा है, आपको doubts हैं, तो most equitable view को ही आपको follow करना पड़ेगा। Then injuria non excusat injurium, that means a wrong does not excuse a wrong. गलत के लिए गलत कर देना कोई excuse नहीं है। Then judicandum est legibus non exemplis, that means judgment must be given by the laws, not by the examples. Examples को follow नहीं करना है, law को follow करना है। Then judicium a non suo judice nullis est momenti, that means a judgment pronounced by a judge in matter not falling within his jurisdiction is of no effect. मतलब कि अगर एक ऐसे जज ने जजमेंट दे दिया है जो उसकी jurisdiction में फॉल नहीं करता, breach of jurisdiction, that has no effect. Remember we discussed two of the writs, prohibition, certiorari, that deals with the breach of jurisdiction. उन रेट्स के पीछे यही प्रिंसिपल आपका काम करता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।